Hello everybody. Welcome back to our session on Python programming. We're discussing concept of strings. Yesterday we looked at a video, and the purpose of playing that video for you was just to understand one very important concept, that any data, be it text or numbers, when it comes to storage of that data in the computer memory, it needs to be converted into forms of zeros and ones. You cannot convert ABCD into zeros and ones, wherein you can actually convert numbers into zeros and ones. That means if I have a number like 78, I can very well have a binary equivalent of number 78, which I can store in the memory in forms of zeros and ones. So any data that we plan to store on an electronic device will have to be, you like it, you do not like it, convert into forms of zeros and ones. And these zeros and ones are nothing but the state of the electronic device, it's on or off, charge or discharge, the kind of the capacitors that you may have. So it's all about converting into forms of zeros and ones. So it's very easy for us to convert numbers into patterns of zeros and one. Text, we cannot do it. Images, we cannot do it. So it is important that when somebody says, I have a digital data, that means it is a data which can be represented in forms of zeros and one. So what is the mechanism that was used? The earliest days, the mechanism that the computer scientists came up with was assigning a unique number to a character. So any symbol that you see on your keyboard or that you must have ever seen on a computer system, that's a symbol. That symbol has been assigned a value. Like A has been assigned value 65, alpha has been assigned value 225, and so on. So every symbol that you see on your keyboard has been assigned some value. So when we try and store that symbol into the computer memory, what it does, it takes the number and it stores the binary equivalent of that particular number. The earliest concept that was used for doing this was ASCII, American Standard Code for Information Interchange, but that was a 7-bit encoding mechanism. That means any data that we would like to store will be allocated 7 bits of memory. It will represent 7 bits. But when I say 7 bits, means 7 months, and 7 months is 128. You cannot go beyond that. But if I start counting from 0, it will be 128 minus 1. That is 127 is the largest value that we could store 7 months. Now, if 127 is the largest value that we can store, those numbers were thought to be good enough as long as we are storing those regular alphabets and regular symbols. But when we had felt the need to store the mathematical notation like sigma, psi, pi, and other things, the numbers were already exhausted. So came in extended ASCII, where 1 byte was used. That means 8 bits. That means you can now have 8 ones. 8 1 is 256. And if I start counting from 0, 2 to the power it is 256. If I start counting from 0, it will be 0, say like 255. So 256 characters were represented by ASCII encoding system. So ASCII gave you an opportunity to store or represent 256 different characters. And that idea was thought to be good enough before 1990s. But in 1990, with the advent of internet, we now started representing or exchanging data on different machines. One may be in Latin, other may be in Japanese, other may be in Devanagari, and so on. Now, we also wanted to have a mechanism where we can represent data which is beyond 256 or other characters, other languages. Let me give an example. Russians had an encoding mechanism called as KOI. Americans had ASCII. Now, if Russian says hello in Russian, when American interprets it, maybe the K in Russian or O and I may be having different values according to the Russian encoding mechanism, the symbols that they have. So if that message was passed to an American system, that will be interpreted in a totally different way, because the same number in English may be representing in ASCII, may be representing some other character. So when exchange of information was done between different machines, then with the advent of internet, all machines became connected. So we constantly had to exchange data between different machines. And that is precisely the time we felt need for coming with different encoding mechanism, and came in an encoding mechanism called as Unicode. This Unicode, and then later UTF, gave us an opportunity to represent every character in almost all the scripts across the globe. In almost all the scripts across the globe. Actually, Unicode was thought to be good enough for most of the common requirement. But there were 2 culprits, the Mandarin, that is Chinese, and the Korean language. And those languages have a mechanism of representing words not by using letters. Like in English, if I have to say cricket, so I'll spell it cricket saying CRICKET or whatever it is.
In Marathi, if I have to say cricket, I'll write kri, potatum pi, and cricket. So I'll use letters to create that word. Where in Chinese and South Korean languages, they do not have letters. Rather, they have symbols. And for every new word that is being coined, probably they will come with different symbols. So they have rules for creating symbols. Now, if they have rules for creating symbols, that's going to create a problem for us. Because as the language takes new words, so for every new word, there is a new symbol. And for every symbol, there has to be a code, a number that has to be assigned. So numbers are going to get exhausted. So need was felt to have multi-byte encoding mechanism because Unicode was only 2 bytes. That means 8 bits ki jagah 16 bits liya. So 2 raised to 16, that means 32,32767 characters we could store now. But with this Russian, Chinese, Mandarin, and Korean, this was also going to be a problem. So came in the concept of UTF-8 that we saw yesterday, where a character can spread across anything from 1 to 4 bytes, and we'll have continuation bits, and then the code will be represented. So the code will now go beyond 16 bits, 2 raised to 16 ke aage bhi jayega. It can be 3 bytes, it can be 4 bytes, and so on. So UTF-8 gives us an opportunity to store characters in multi-byte mechanism. So some character can fit in 2 bytes, some will fit in 3 bytes, and some will fit in 4 bytes. And you can extend it if you really want to, but that is really not required. Because all scripts, all characters, all symbols from all scripts have now been very easily accommodated or represented by UTF-8. UTF-8 is said to be a golden rule or golden standard for representation of character data or symbols in the computers. It's a golden standard. Not that that's the only standard. There are other standards as well, but UTF-8 is the first one. If you have to make a choice and you're not very clear which encoding mechanism should I use, mark my word, which encoding mechanism that we have to use. Why am I saying encoding? ASCII is an encoding mechanism. EBCDIC is also encoding mechanism. Unicode is encoding mechanism. UTF-8 is an encoding mechanism. What are we encoding? Symbols are encoded in forms of patterns of zeros and one. So these are all encoding mechanisms that we have. Let's do a Wikipedia search for various encoding mechanisms that are there. So you'll have an understanding as to there are so many different encoding. So I'll say character encoding formats. So if I come to character encoding, is the page visible, everybody? Yes. Okay. So you'll find over here, there's a lot of history and everything has been given where it started. American Code for American Standard Code for Information Interchange, that was the one. And when this was not found enough, we came in BCD. Then we came with the extended character sets and so on. So we had this EBCDIC, okay, that was 8-bit, while ASCII was only 7 bits. Then UTF-16 came in, that was 16 bits. UTF-32 came in, that was 32 bits, and so on. Now UTF-32, why shouldn't I be using UTF-32? Or why is it not popular? Here, every character will occupy 4 bytes. You and me as Indians will be happy with that. Because if I have to represent a character like fur, we saw yesterday, the code of fur was 2748 or something like that, 2747 or 2748. Now, if I convert this number 2748 or 2747 into binary, it will definitely take more than 2 bytes. So I require more than 2 bytes of memory. That means I can use UTF-32. Now, UTF-32 means 4 bytes. Okay, 32 bits. That means every character is represented by using 4 bytes. Now, you and me as Indians are happy. But if you ask some American, he will be annoyed. Because if he says HELLO, all the characters, each one of these characters requires only 1 byte. Because their codes are very small, less than 100 or less than 122, even if it's uppercase or small case. And that doesn't even require 1 byte of memory. And if you say now H will take 4 bytes, E will take 4 bytes, L will take 4 bytes, where an American was storing hello in 5 bytes, now he'll have to store 5 4s are 20 bytes for storing in UTF-32. UTF-32 means every character will be of 32 bits. So his size of the file will either become 4 times or it will become 2 times the original size of the file. That's wasteful. And to avoid that, we now have UTF-8, that is multi-byte character encoding mechanism that we have. UTF-8, that's a multi-byte character encoding mechanism that we have. And that's the most popular encoding mechanism that we have today in the market.
But then point was, these are not the only encoding mechanism. Other than that, also you will find a lot of encoding formats. Let me just show you. Like I was talking about KOI, that's for Russian. Okay. For covers Russian character. Then they have Big Five, that's for Chinese. Big Five, Big Five, Big Five, Big Five. Here, Big Five. Chinese as spoken in Taiwan. Okay. So Big Five. Chinese character encoding methods used in Taiwan, Hong Kong, Macau for traditional characters and so on. So for Hebrew, ये अलग है, Arabic, ये अलग है. So for every system, they have a different encoding mechanism. But Unicode में UTF-8 actually gives you an opportunity to represent all these characters. So UTF-8 is said to be a golden standard for representation of various characters. But if you're working with a specific language, don't forget to see this page to find what the encoding format is. You'll be wondering, why am I showing you this? Because we are going to need this in today's session. So that was about how the data is represented in the computer memory. So if I have to represent a data in the computer memory, every symbol that I would like to represent has to be assigned a number. That number gets converted to its binary equivalent, and that binary equivalent gets stored. So if I want to say I love you, so I ka code, then space ka code, then L ka code, then O ka code, then V ka code, E ka code, and so on. And each of that code will be converted to its binary equivalent, and that patterns of zeros and one will either be stored or transmitted over the network to you. If I have to pass that message over the internet or any wire to you, I cannot pass A or B over the wire. What I can pass is only the pulse on and off that can get passed over the wire. So if I have to pass that particular thing over the wire means any form of communication, I have to convert it into forms of zeros and one. So 0 is low and 1 is high. So those pulses could be transmitted across the network. Have you understood this basic concept that we had seen yesterday in the video? Is there any explanation that you need? Please ask any questions that you have before I actually show you how Python can get you the details as to what is happening underneath. Any questions, anybody? Harsh, Kaustubh, Prithviraj, Shantanu? Kaustubh, Harsh, Shantanu? No, sir. Kaustubh? Kaustubh, say go क्या? Okay. So let's proceed further. So if I have to say hi Shantanu, and that too over the network, I have to pass this particular message. So if I have to pass this message over the network, I need to convert this into packets. You must have heard that concept of packets. So when you are on the internet, you see, you give a command called as ping, and you see how many packets are lost and how many packets have been transmitted within a short period of time. You can give me your IP address over the network, or you could find any IP address of any other machine, and we can see how many packets are being transmitted to that particular IP address and so on. What are those packets? Those packets are nothing but patterns of means sequence of zeros and ones that we are actually transmitting. Like we have this, let us see the IP address of suppose some server. So I say IP of yahoo.co.in. इसका IP address क्या है? Suppose Yahoo Mail का ही IP address है. Suppose I don't know. Let us check it. ये है क्या actually? Let's see if it is there or not. So I can start with my command prompt. I hope you all can see what I'm doing. Yes. I started with the command prompt and I say ping and I give that IP address. It says ping request could not find host. Oh, there was a space in between. I need to remove the space and I pass it. Oh, the connection was established. That means that site is reachable. So what you type yahoo.com is nothing. Yahoo.com is nothing. That's just a name given to this IP address. So remembering these IP addresses are difficult. Remembering the name is easy. So instead of writing this, I said ping. It's one and the same. Do you see the number? It still says
198.136.203.23. So pinging yahoo.com. So you may say yahoo.co.in actually is this IP address or this machine on the World Wide Web that we're trying to reach. And it could be done for anything. Like if I say ping ircpc.com railway reservation, it says, okay, this is an IP address for railway 103.111.163 and 23 and so on. So these could be the domain names. These domains are hosted on this particular location. So that is identifying that machine, the server on the World Wide Web where the site has been located. And it says requested timeout. Currently the site is down, looks like, or I have, so it says 4 packets sent and lost all the 4 packets, 100% loss. Whereas over here we had sent 4 packets and received the 4 packets. That means successful. The average time that was required is 275 milliseconds and so on. Whatever it is, you could try and visit different sites. So I could just say rediffmail.com. Here we go. That's an IP address of rediffmail.com. So it's trying to ping to that particular site and request a timeout. For whatever reason it may be the case, we are not reaching this particular IP address. There could be some other IP address that may be there where this particular server must have been hosted, whatever it is. So let's say google.com and see. Yeah. Here, google.com is reachable. And that was at 142.250.192.100. And take a combination of these 4 digits. That's IP4. Today we have IP6 also. So 3333. If you do permutation combination, how many different numbers you're going to have? Huge number of combinations we can have. Correct. So that means number of machines on World Wide Web. Today we are falling short of this 4. So we now have IP6. That means you have 6 such sequence of zeros and ones numbers. Okay. And 999.999.999.999.999. So think about the combinations that we can have. Billions of machines over the network could have been connected. Average time minimum 5 seconds tha, maximum was 11 seconds, average time was 8 milliseconds to connect to this particular site and so on. So we saw some more command like ping. So what is ping doing? Let's say तो ping क्या कर रहा है? It's in history. Pings to a specified host until stopped. To see the statistics continue, type control break, stop, control C, okay. So it will go to some host, the server where that site has been located, deployed. It will give some information and so on. You can ping a Hyper-V network virtualization address provider, force IP4, force IP6, and so on, IPv6. Okay, so that's your choice. So that was about the data that you'd like to send across, that's sent in forms of bytes. And the machine is also identified by a number on the World Wide Web. But I was saying, I want to say hi, Shantanu. So the word hi and the space and then Shantanu, all those things, unless I do not convert it into sequence of bytes, I cannot create a packet. And if I cannot create a packet of those patterns of 0 and 1, I cannot transmit my information or message to Shantanu. Not possible. So how is this data transmitted? So in Python, if you're a Python developer and you want to create a byte string, that means string which is represented in forms of zeros and ones. So it's very easy to do in Python. How? Let's explore how can we go ahead creating byte strings in Python. Just give me a second.
Okay, let's proceed further. I'm having some issue with the system. So I've been asked by the vendor to log the machine. So let me start with the software that will capture the working that we're having. You could also make use of this software. I'll just show you. That logs all the activities that are happening on your machine. I'll just share the screen. So this is a freeware which you can use for non-commercial purpose. And then once you say start, or before start, I could have just said settings and then I could have started. Let's do it once again. I could start. I could go to settings. It says so summary at the startup. Show. So English language chahiye. Wake up. Disabled by GPU. Heavy order. Default black. Backup user settings. Reset reference. Check for update. Safety, just give me a second. It's okay. I start. So it will monitor my system. So I'll just keep it running in the background. It will tell me how many CPUs, what's the workload. There is wealth of information, but I'll just keep it. Well, I just have to submit it to the support company. I'll just keep it aside. Let's start with our discussion on concept of byte string. So we are talking about byte strings. That means strings that can be converted into forms of bytes. But not very often we are, as a novice, as a new developer, we are not really, we have just started learning computing. We are not going to send some message across the network. So today you may not be sending any message across the network. That does not mean you'll never be sending any message across the network. You will definitely be sending message across the network over a period of time. So we need to be aware as to how we can achieve this particular thing. How can we represent data in byte format, especially the strings? So let's try and understand. So Python 3.0 uses concept of text and binary data instead of Unicode strings and 8-bit strings. So you have text and binary data. Every string in Python 3 is Unicode, but encoded Unicode is represented as binary data. That means if I say abhaya in Marathi, Devanagari, so that abhaya will now be encoded by using Unicode format, and that Unicode will be converted to its binary. So Unicode is what? Giving some number to that particular symbol, and then the converting that number into a binary value. So that's the basic idea. So type of data used to hold string is str, and type of data used to hold bytes is bytes. So you have two types of data, a string data and a bytes data. So how do I create a byte strings? So if I want to create, it's not possible to mix text with data, byte data in Python 3, it will raise an error. So if I say B of hello, तो byte string बन जाएगा. और byte string को आपको text में convert करना है, तो you let us say str of x. So I can convert that byte string into text, and then we can encode that particular data and send it across. So let me give you a demonstration of the same. ये encoding वगैरह कैसे करते हैं? What are the different encoding mechanisms that we have? If I change the language, how do I encode?
Those things we'll try and understand. Okay. I can create the literals of type byte. I can represent the byte data in different forms. So we'll quickly look into the two very important methods which are available over here. One is to encode the data, another is to decode the data. So let's have a look at all these concepts. Let's jump ahead. Here we go. So I'm going to create a byte string. Suppose if I said this is just a string is equal to, I say hello, watch it. And if I say type of string, you get a string type of data. But suppose if I say the string is equal to, I say B and hello. And now if I check the type of the string, if I've created the string, I just change the name, it says it's of type bytes. Sir, I cannot see any patterns of zeros and ones. As long as the binary string represents character which are within the first 128, that means ASCII value, they will be represented on the screen as the character itself. You don't have to take an code corresponding to it. You don't have to take it. So here I'm trying to represent a binary string. This binary string contains letters. These are all within the range of 127. That means 0 to 127. ASCII ke range ke andar English characters are there. So you don't really have to worry much. But suppose if I had a regular string and I wanted to convert this regular string into binary string, then what I could do? Then I have to specify which encoding mechanism do I want to use. So I could just say your string dot encode. Okay, and I can specify suppose UTF-8. So if I see UTF-8, so what has happened? Your string, watch it. So I say suppose S1 is equal to hello, watch it very carefully. If I say type of S1 str hai, I say S2 is equal to S1 dot encode, and for encoding I'm going to use UTF-8. That's a golden standard which is there. ये कर लिया. तो S2 में क्या आ गया? B hello. So B is a prefix saying it's a binary string. And if I check type of S2, वो कहता है bytes है, whereas type of S1 string है. But you'll still not find significance. इसका कुछ ज़्यादा फायदा अभी पता नहीं चलेगा आपको क्या हो रहा है. Okay, so we have encoded string, and we have seen by using encode, and if I use encoding format, it will tell you what is the, it will return you a string which is encoded by using UTF format. And we just now, a few minutes back, we had seen UTF-8 format. UTF-8. If you come to UTF-8, it says variable length character encoding standard. Variable length from 1 byte to 4 bytes. Encoding used for electronic communication. Defined by Unicode standard. They name derived from Unicode, Universal Coded Character Set. Okay. And transformation format 8 bits. 8 bits के multiple bytes multiple bytes it can use. So UTF-8 is capable of encoding all one, how much? Unit, 10, 100, 1000, 10,000 lakh, 10 lakh. So all these characters, valid characters in Unicode code points can be represented by using UTF-8. But 1 byte se leke 4 byte tak it can actually vary. Or you can actually extend it to any number of bytes and so on. So here you go. So it tells you about how it can represent with the continuation character. ये continuation characters के साथ कैसे represent कर सकते हैं. If I had such a big number, उसका code point is this. So I'm saying it will require 4 bytes. तो ये 4 bytes में है, और ये 010110 ये उसके continuation bytes है, और आगे उसका जो भी data रहेगा वो उसे represent करेंगे and so on. What we had seen yesterday. So here it talks about all that data that has now been represented. Okay, examples. Okay, now that all these characters can be very easily represented using UTF-8 mechanism. I'm just telling us how to guess it. You can go through this code page layout. Quite interesting. You'll love it. Okay. Now the point is not about representing the data.
but when we represented, we hardly got to see any difference. कुछ दिखाई नहीं दिया. So every character that we have has a code point, and what gets stored in binary format, when I convert it to byte string, what gets stored is its binary equivalent. Like, suppose, let's take the simplest of the example. Suppose you have a character E. Watch it, huh? S1 is your character E, simple character E. So if I check ORD of E क्या है, ORD of E नहीं, ORD of S1 क्या है, ये था 101. So 101 is a code point of E. Listen to me very carefully. 101 is a code point of E. आप बोलोगे सर ASCII value of E. Python uses Unicode, so I'll say code point. I'll not say ASCII value. It's beyond ASCII value. Like instead of E, I could have taken Marathi also. I could have taken O. And so O का code point is what would I got. अगर मैंने यहाँ O लिया, I'll get code point of O. What I'll get is code point of O. So if I say ORD of S1, so I got 2309. Now 2309 is code point of O. Now 2309 definitely not fit in 1 byte if I take its binary equivalent. So if I say bin of 2309, अगर ऐसे दिखते हैं तो ये 1 byte से ज्यादा है. It's more than 1 byte, 8 bits से ज्यादा है. So this will not fit in 1 byte. So it will require at least 2 bytes to represent this particular data. ये देखो ये patterns of 0s 1, 8 bits से ज्यादा है. So it will not fit in 1 byte. It will require more than 1 byte to represent this data. So in that case, I need to encode this O using UTF-8. So how do I do that? I could have said S1 dot encode. Listen very carefully. S2 में store करते result. I say S2 is equal to S1 dot encode. Okay, and the format that I'm going to use is UTF-8. That's the golden standard that we use. So I'm saying ये जो A है ना, उसको translate करो और convert करो using UTF-8, encode करो by using UTF-8 and get me a binary string. So let's print S2 now. So if I check type of S2, it says byte, and if I print S2, let's see what do you get to see. S2 अगर मैं print करता हूँ, oh, you got something different. Now you may be wondering ये कहाँ गया A? अरे A छोड़ दो. Let's take one more string so that you'll understand what's happening. If I have a string, not just a single letter, I have more than one letters which are there. I say A, B, B, K, and D, like what we have done yesterday. So ये A, B, K, D है मेरे पास. I S1 as A, B, K, D. Understand carefully. Yeah? Now I say S2 is equal to S1 dot encode using UTF-8. You can change this and see. Yeah? Now if I say type of S2, it says bytes. And if I say print S2, it says ah. So this is what is A, B, K, D. Now you may be wondering, yeah, A, B, K, D, kahan hai? How many bytes it has taken? So let's see. A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yani A, B, K, D, that means 4 characters took 12 bytes of memory. That means each of the Devanagari character is taking 3 bytes. तो यहाँ देखो ये तो ऊपर 3 bytes है, ये आपके 3 bytes है. तो ये 3 bytes को मिला के what you have is your A. Like 3 bytes को मिला के फिर B, फिर K, and फिर ये D. So it was stored across 3 bytes. Then you may say, sir, 3 bytes है तो ये क्या है? अरे it's hexadecimal equivalent of that particular value, nothing else. तो अगर ये hex value है, तो I could have just checked hex of hex नहीं. अगर मेरे पास hex है data, and I would like to convert it to or assign it to a decimal value, so I could just say D is equal to, and I'll take that hex value 0x. I take the number 0x. क्या लिखा है E0. तो D में क्या है 224 है. हाँ, listen to 224 है. तो 224 ये
XE0 आ गया, तो A4 क्या है? A4 क्या है? 164 है. दैट मीन्स द फर्स्ट 8 बिट्स जो स्टोर है आपके, वो कौन से है? आई जस्ट शो यू, ये आपका है. तो इफ आई से बिन ऑफ बिन ऑफ डी, ये पहले 8 बिट्स आ जाएंगे. तो अगले 8 बिट्स क्या आएंगे उसके आगे के 8 बिट्स ये है. तो बिन ऑफ डी, ये इसके आगे के 8 बिट्स, यानी पहले ये बिट्स, फिर उसके आगे ये बिट्स, फिर उसके आगे ये वाला 85. तो वो भी रिप्रेजेंट करके देखते हैं. 85 और उसका बाइनरी. तो यह जो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं के लिए दिस एंड दिस, तो ये कैसे क्रॉस चेक करें हम लोग? लेट्स डू वन थिंग. का कोड क्या था देखते हैं. 1001, ये 0001001 इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग. ऐसा कुछ आ रहा है क्या यहाँ? देखते हैं. डिड आई सी, पहला कंटिन्यूएशन कैरेक्टर्स है और फिर इट इज ट्राइंग टू रिप्रेजेंट दैट पर्टिकुलर डेटा. देखो ये 101, then 4 zeros and then 1, 1001 देखो ना, and then this 1 2 3 4 zeros and 0 1, ऐसा है. तो क्या है? okay, 1 2 3 4 101. okay, so we'll actually have to convert them into one single number. तो ये तीनों को मिला के we'll have to, एक इसमें कंटिन्यूएशन बिट्स भी है, तो पहला पार्ट कंटिन्यूएशन बिट्स रहेगा और फिर आगे. तो ये इतना ही है. पहले 3 बिट्स आर कंटिन्यूएशन बिट्स. तो 10100 10100, आगे फिर क्या है? 00100. तो ये यहाँ तक आ गया 00100. और फिर ऊपर से क्या लिया हमने? सबसे पहले में से 1 2 3 देखने का है, और पहले में से बचा आपका A1. तो वील एक्चुअली हैव टू कंबाइन देम. तो ये क्या कर रहा है? ये 3 बाइट्स मिला के आपका एक नंबर है. सो दिस 3 बाइट्स पुट टुगेदर इज वन वैल्यू फॉर यू. तो यू हैव टू कंबाइन दिस 3 बाइट्स टू गेट योर O character. You have to combine these 3 bytes to get your B character. You have to combine the next 3 bytes to get your B curve, and combine these 3 bytes to get your B curve. तो नेटवर्क पे क्या जाएगा? ये जीरोस बन जाएंगे. दैट मीन्स जब आप भेजोगे तो नेटवर्क पे ये फॉलोड बाय दिस ऐसे पैटर्न्स ऑफ जीरोस 3 पैकेट जाएंगे. तो फर्स्ट पैकेट, सेकेंड पैकेट, थर्ड पैकेट, ये मिला के आपका बन जाएगा. तो योर was encoded into patterns of zeros and one. This is just a short form of representation of binary in hex value. So hex is nothing but, ये भी हम machine code ही कहते हैं, but short form है. These are very difficult to read, whereas this is far more easy to read. And then the B, and then K, and then D, and so on. तो ये आपका continuation bit का character था पहला, कि कितने bits use कर रहे kind of thing to represent. So you have any data that will always be, ये message आप transmit कर सकते हो over the network because this is binary. You may say sir binary क्या है? अरे hex में represent क्या है? Nothing else, machine code है. तो if I have to just say coder as a message that I have to send across, it will be converted to these patterns of zeros and ones, and then those zeros and ones. These patterns of zeros and ones, ये binary है, first, second, third, 3 bytes. So first byte, second byte, and third byte. These bytes will be transmitted over the network. So that's how we could encode. But suppose somebody has given you such a string, encoded data, and you want to know what is this representing, because I send a message to you, I converted this code into its binary equivalent, and I send this message to you. You received this message, but will it make any sense for you to read this message if you see this message directly? So you'll have to decode this message. Suppose this is a message that you have received on your machine. This is a message that you have received on your machine. And I told you, I have encoded the message in UTF-8 and I have sent across to you. So you can decode it. How you could do? You could say msg.decode, decode using UTF-8, the same mechanism I like to use for encoding, decoding. आगे आपका work करें. So how is the exchange of information happening? From my machine, when I want to send a message to you, I'll encode it into binary format, that is zeros and ones, and I'll transmit it to you. On your end, when you are trying to decode the data, you will decode that particular sequence of zeros and one and get converted into whatever
See, so any character across the globe, let be it Chinese, Japanese, whatever it is, you could definitely encode. Let's try and do that. Suppose there was some Chinese or Japanese character that is there. Let's say Japanese. Let's not take Japanese because what? Why am I saying? Well, let's not take Japanese because they have more than one encoding mechanism when it comes to Japan. There are 3 to 5 different encoding. That is a traditional Japanese. There is simplified Japanese, and then there is something more Japanese. Let's try. I say Japanese script. Let's take some character from Japanese. अगर यहाँ कुछ है तो यहाँ कुछ तो character है. Okay, these are some characters which are in Japanese. Let's take it. We'll encode it. Okay, so I'll say J string. ऐसे कुछ तो नाम is equal to these Japanese characters. Now I want to send these Japanese characters. क्या था Japanese character? क्या था kanji. Okay, that's the way of writing Japanese. So I want to send this message to you. So what I'll do is I'll say J string dot encode. If UTF work करता है क्या देखते हैं UTF-8. If it doesn't work, then I take convert हो गया. That means this is the sequence. कितने हैं 1 2 3 4 5 6 bytes में this has now been represented. So had I said encoded string is equal to so and so. So if I now print the encoded string, it will print this. ये machine message आपके पास आ गया by zeros and ones. Now once you receive these zeros and ones, you'll have to decode it. So I'll say dstr, ऐसे कुछ तो नाम दे रहा हूँ, encoded string dot decode. मैंने कहा UTF-8 से decode करो and get me the data. अब देखते हैं प्रिंट करके प्रिंट dstr क्या है, वही 2 कैरेक्टर आगे दोबारा. So any data that we have to transmit over the network, we'll have to first encode it using some encoding format. तो एक kanji का encoding format क्या है देखते हैं. 1946 taken from Chinese script and used for writing Japanese. Okay, इसका encoding format I don't know what is the encoding format for it. तो Japanese का encoding format देखते हैं. कहता है ISO 15924. Here it tells you. तो लेट्स ट्राई एंड एनकोड इट. तो ये कांजी का कौन सा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के कैरेक्टर्स कांजी में है, यहाँ से लेके हिरानी में, काटानाका जो भी रहेगा उसमें है. ओके, सो दीज आर, वी कैन डू सम रिसर्च एंड फाइंड आउट. समझो ये है, समझा ISO, ये क्या कहता है, लेट्स सी, कहता है ISO 15924 code for representing name script, international standard है. Okay, is Python supporting it? Let's see. The unknown encoding, I don't know this encoding. Is the space to be removed or something? वो नहीं आइडेंटिफाई कर रहा है. आईफोन यूज कर सकते हैं क्या वहाँ पे? आईफोन था ना पहले, निकालते नहीं. नहीं. So normally when there is a name given to the encoding mechanism, that becomes easier. Code. So you can just say
तो JS लिखा है कि देखते हैं। नहीं, yeah, shift JS दे रहा है। I checked it out. Okay, 3 encoding. Shift JS, UC, and ISO something something. So shift JS is working. So that's a different form of encoding. तो वही मैसेज हमने एनकोड किया है बाय यूजिंग शिफ्ट JS। नाउ नोट कीजिए मेरी एक बात। अब इस तरह इसे डिकोड करके देखते हैं। ओके, तो ये एनकोडेड स्ट्रिंग है। वॉच इट, देयर इज सम इंटरेस्टिंग थिंग दैट विल गेट टू सी। अगर मैंने एनकोड किया बाय यूजिंग दिस फॉर्मेट, तो डिकोड भी उसी फॉर्मेट्स में करना चाहिए। तो आई वुड हैव टू से DSTR is equal to encoded string dot decode and to SHIFT. I don't know whether it's right or not. तो प्रिंट देखते हैं काम कर रहा है क्या। DSTR आगे वो क्या रहता है। बट अगर आपने एनकोड किया एक फॉर्मेट से और डिकोड करे दूसरे फॉर्मेट से, इट विल नॉट वर्क। लाइक I have encoded by using shift JS, and while decoding I use something else. I say UTF, I don't know UTF-8 काम कर रहा है क्या नहीं। तो कहता है UTF-8 cannot decode 0xA position, invalid, start byte and so on. So if I encode by using shift JS for Japanese, decode also by using shift JS. If I encode it by using UTF-8, decode also by using UTF-8. But have you noticed one thing? If for this string, if I am using UTF-8, it took how many bytes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So each Japanese character took 3 bytes. But when I am using shift JS encoding mechanism, so in that case, each Japanese character was represented only across 2 bytes. So every encoding format will assign different code for those symbols, characters which are there. And depending on different character codes that have been assigned to that particular code points that have been assigned to different symbols, the amount of memory that is required to represent the data can also change. So that was about encoding and decoding. Have you understood this basic idea? Yes or no? Monica and Praneet, क्या doubt है? Sir, I have joined late. Okay, what's the video later? सर वो स्टार्टिंग को BA-0 क्यों आता है? क्या बात करें, कल नहीं देखा क्या? बाइनरी में जब भी रिप्रेजेंट करेंगे इट विल ऑलवेज स्टार्ट विद 0B. 0B इंडिकेट्स इज अ बाइनरी डेटा। सर वो बाइट्स के पहले। हाँ, इट्स बाइनरी ना, तो B इज अ प्रीफिक्स टू हेल्प अस अंडरस्टैंड कि ये बाइनरी डेटा। ओके ओके। मेमोरी में कुछ नहीं रहता है 0B, इट इज जस्ट फॉर डिस्प्ले पर्पस। But at least understood. Now, in whichever language you may be working tomorrow, you may be working C++, you may be working Java, same technique is to be used. Siर्फ just that Python में इतना आसान था इनकोड करना, Java में थोड़ा सा और कुछ लिखना होगा, C++ में और कुछ करना होगा, but idea will still remain the same. That means if I have to transmit any data over the network, every data that I want to transmit over the network will have to be converted into binary format, and only then I can transmit. If you receive the binary data, you have to translate into text. So you have to decode the data. So when you do Google, when you go onto some web pages, the data that comes to you over the network comes in binary format. Your browser then decodes that data. And what is the encoding mechanism? That information is already sent in the header of the page that is displayed to you. Then the browser comes into action and it decodes the data using that encoding format. So encoding, decoding happens every page that is been displayed to you on your web page, in your browser. It constantly keeps on happening. Any questions so far? No, sir. Okay, so I'm going to write a string. So I'm going to create a string. And how is that string? The string is something like this. If I say S is equal to something like this. Now read the string for me.
S is equals to B. बी नहीं था, वो बी मतलब बाइनरी था. दैट मीन दिस इज अ बाइनरी स्ट्रिंग दैट इज देयर. ये स्ट्रिंग देखो यहाँ स्टार्ट हुआ है, ये कोट्स पे स्टार्ट हो रहा है और इस कोट्स पे खत्म हो रहा है. एंड बी एज अ प्रीफिक्स इट टेल्स अस इट्स अ बाइनरी स्ट्रिंग. देन यू वांटिंग वेयर इज बाइनरी डेटा. अरे जहाँ स्लैश एक्स से शुरू हो रहा है ना वो बाइनरी है. दैट मीन दिस वाज अ बाइनरी डेटा दैट इज देयर. हाउ कैन आई प्रूव दैट? लेट मी शो यू. If I want the first character from the string S, how do I get that first character? Come on, tell me, how do I get the first character from the string? If I want. अरे जल्दी बोलो, F चाहिए मुझे तो कैसे लेंगे स्ट्रिंग में से? Can you all hear me? या हाँ. स्प्लिट करके सर इंडेक्स से ले सकते हैं इंटीजर. स्प्लिट क्यों करना है? डायरेक्टली इंडेक्सिंग करेंगे S of 0. Yes or no? आ जाएगा, डोंट वरी. S of 0. अरे S of 0, S1 नहीं, S of 0. ये मेरा स्ट्रिंग है. This is my string. Oh, this did not get represented. No, कुछ नहीं, वही है, S of 0 ही है. स्ट्रिंग ढंग से रिप्रेजेंट नहीं हुआ था. So if I print the string, print S, that's my binary string. So if I say S of 0, I'm going to get 102. Now what's 102? 97 of small case A. So 97, 98, 99, 100, 101, 102. A, B, C, D, E, F. What did everybody? Okay. तो F था. ये बाइनरी स्ट्रिंग है ना, तो इसका बाइनरी डेटा आएगा F. तो दिखाई दे रहा है B मतलब बाइनरी स्ट्रिंग है, तो F नहीं है वहां, बाइनरी डेटा 102. लाइकवाइज अगर मैंने कहा S of 1 तो 101 आ गया, दैट्स O. S of 2 वो भी O, करेक्ट. पर जब मैं S of 3 कहता हूँ, ये 221 आ रहा है. नाउ 221 क्या था? तो लेट मी जस्ट शो यू. इफ आई सेड bin hex of 221 क्या है? hex of 221 क्या है? OXDD. Yes, sir. यानी XDD जो था ना आपका, वो आपका थर्ड कैरेक्टर था 221. और 221 के आगे क्या है? बार है, हाँ, BAR. तो S of 3 ये था, तो S of 4 B है 98. A is 97, B is 98. S of 5 क्या है? BA, A is 97, and then R, ये 91 जो भी रहेगा, R नहीं, S of 5 के बाद 6, 114 जो रहेगा वो आ गया. तो इट वाज अ बाइनरी स्ट्रिंग. एवरी कैरेक्टर व्हेन आई एम ट्राइंग, नॉर्मल अगर स्ट्रिंग होती आपकी, देखो S इज इक्वल टू, अगर आपने हेलो लिखा होता और अगर मैं S of 0 कहता तो टेक्स्ट डेटा आएगा. सॉरी, S of O नहीं, S of 0. इफ आई सेड S of 0, H आ गया. S of 1 E आ गया. बट दैट डिड नॉट हैपन ओवर हियर. यहाँ आपके पास नंबर्स आ रहे थे. व्हाई? ये बाइनरी स्ट्रिंग है. तो जस्ट दैट इट्स कोड, यहाँ ये 221 बियॉन्ड 127 है, इसलिए वो स्लैश एक्स ऐसा था. अब इसे डिकोड करके देखते हैं. लेट्स डिकोड दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग. इस स्ट्रिंग को डिकोड करके देखते हैं. ये 221 है, दिस इज 221. उसका करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर देखना है आपको. तो आई कुड जस्ट से, ये आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग है, इसे मैं इसमें स्टोर करता हूँ. ये एनकोड स्ट्रिंग है, इसे डिकोड करते हैं. डिकोड स्ट्रिंग इज इक्वल टू एनकोड स्ट्रिंग डॉट डिकोड यूजिंग UTF-8. कहता है, Sir, UTF. अच्छा ये स्पेलिंग गलत. UTF-8 कहता है डिकोड कैनॉट डिकोड OXDD पोजीशन 3 इनवैलिड कंटिन्यूएशन टाइप. यानी ये जो डेटा है, ये जो अपना बाइनरी स्ट्रिंग जो हमने डायरेक्टली टाइप किया था, ये कोई रेगुलर नहीं है. तो रेगुलर नहीं का मतलब क्या है? लेट मी जस्ट शो यू. सपोज लेट मी टेक सम कैरेक्टर लाइक, ऐसे वो एनकोड ही नहीं किया गया था UTF-8 से, मैं तो डायरेक्टली टाइप किया. सपोज इफ आई से ABCD, वॉच इट, ABCD, and then I type अल्फा दिखाई दे रहा है. से ABCD एंड बीच में आपका एक देवनागरी कैरेक्टर से
ए और आगे ई, ऐसा कॉम्बिनेशन था सपोज। तो आपने एक ऐसा स्ट्रिंग बनाया, तो अगर प्रिंट करने जाते हैं, प्रिंट एस, ये आपका स्ट्रिंग है, इसे अगर एनकोड कर देते हैं तो आए कैसे, एस इज इक्वल टू एस डॉट एनकोड, एनकोड के लिए मैं यूज करता हूँ UTF-8, एंड अगर मैं प्रिंट कहता हूँ अभी, ये आ गया ABCD जो 128 से नीचे है वो डायरेक्टली दिखाई दे रहा है, ई भी डायरेक्टली दिखाई दे रहा है, ये जो बीच में जो है ना ये आपका ए है, ये वाला मराठी का एक रहता है ए वॉट एवर इट इज। तो ये 3 कैरेक्टर्स मिलके यहाँ तक 3 बाइट्स, 1 बाइट, सेकंड बाइट एंड थर्ड बाइट, ऐसे 3 बाइट्स मिला के वो बीच वाला कैरेक्टर। अब अगर इसको डिकोड करना चाहेंगे तो ये वेरी इजी, आई विल से एनकोडेड स्ट्रिंग डॉट डिकोड, एंड दिस इंफॉर्मेशन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो टॉपिक डिस्कस करें आगे जाके एप्लीकेशंस में हर जगह इसको इसका इस्तेमाल करना होगा। तो इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस, फ्यूचर में मुश्किल हो जाएगा। आई विल से हियर UTF-8, हमने एनकोड और डिकोड कर लिया। आगे आपका डेटा वापस व्हाट इज इट, सर दिस सर ABCD क्यों नहीं एनकोड हुआ? ABCD भी एनकोड हुआ है, बट एज लॉन्ग एज योर ब्राउजर, योर कंसोल विच इज देयर, दैट इज नहीं हुआ है। मैं प्रूव करके दिखाता हूँ, हुआ है, देखो आप बोल रहे नहीं हुआ है, मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। ये आपकी एनकोडेड स्ट्रिंग है, यस, यस। आपका कहना है ABCD एनकोड नहीं हुआ है, करेक्ट? हाँ। तो मैं कहता हूँ ये आपका ES के अंदर का पहला कैरेक्टर क्या है, क्या कह रहा है? 97। क्या ए दिखाई दिया आपको? नहीं। नो, द पॉइंट वाज 127 के अंदर के जो कैरेक्टर्स है ना, योर कंसोल जो है ना, आपका कंसोल इज इन अ पोजीशन टू रिप्रेजेंट दोस कैरेक्टर्स एज अ सिंबल डायरेक्टली। 127 के आगे जो चले जाएंगे ना, रादर 255 के आगे जो जाएंगे, उनके लिए यू डोंट हैव अ चॉइस बट टू रिप्रेजेंट देम इन बाइनरी फॉर्मेट ओनली, बाइनरी स्ट्रिंग एलिमेंट। बट योर पाइथन इज सो स्मार्ट, अगर आप डायरेक्टली टाइप करते हो कोई भी तमिल कन्नड़ा कैरेक्टर, वो डिस्प्ले करेगा। बट इफ आई हैव टू सेंड इट अक्रॉस द नेटवर्क, आई हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट इनटू बाइनरी फॉर्मेट एंड देन कन्वर्ट। ये बी जब भी आएगा ये सारे बाइनरी है, जैसे E0 97 दिया, नॉर्मल ABCD होता ना, S इज इक्वल टू ABCD, यहाँ इनकोड नहीं हुआ है, तो S में कह देता ना, तो यहाँ S ही है पहला, S में है B, S में है C। वैसे एनकोडेड स्ट्रिंग ऑफ 2 में 99 है, ओके। ABC में दिखाई दे रहा है 99 है, ये एनकोड हुआ है, जस्ट दैट इट इज रेंडर्ड एज अ कैरेक्टर। वो इंटरप्रेट कर लिया अपने ब्राउजर ने, अपने कंसोल ने, और उसे सही तरीके से डिस्प्ले कर लिया। ये भी रेंडर हुआ है ना, ये Yes, भी yes. रेंडर हुआ है। कहाँ जब एनकोड किया था, ये बाइनरी स्ट्रिंग है आपकी, बट ए इसका कोड जो है, इसका कोड भी देख लेते क्या है। कोड देखने के लिए कौन सा फंक्शन है? ORD। ORD ऑफ O देखोगे तो ये 2319 है। तो ये जो नंबर था ना, ये कुछ नहीं तो 2319 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन स्प्रेड अक्रॉस 3 बाइट्स, 3 बाइट्स में 231019 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन था। इधर ओके? Yes. Have you all understood this particular concept of encoding and decoding strings, binary strings? And you can represent binary string, you can do all the operations that you carry out on regular strings. जैसे 2 string concat कर सकते हैं, वैसे binary string को भी concat कर सकते हैं आप. So all those operations are very much valid. Multiplications are valid. In and not operators are valid. Indexing चलते हैं, functions चलते हैं, जैसे length, max, min, ये जो functions हमने call किए थे, all of them can be used in binary string as well. That's also something which is very interesting to see. Now, tell me, in this string, कौन सा string था आपका? अब कहा गया, ये आपका एक मैसेज है, ध्यान से देखो। और इसे कैलकुलेट करके बताइए ये कितने कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग है, कितने कैरेक्टर दिखाई देगा आपको यहाँ? लेंथ कितनी है? कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यस और नो? Yes, sir. 4. ओके, तो इसकी लेंथ अगर हम लोग देखते हैं, लेंथ ऑफ माय मैसेज, तो कहता है 12।
12 क्या बाइनरी स्ट्रिंग है ना, तो Yes. 12 बाइट्स की स्ट्रिंग है, दिस इज 12 बाइट्स की स्ट्रिंग. बट इफ आई से लेंथ ऑफ msg डॉट डिकोड यूजिंग UTF-8, अगर इसे मैं डिकोड करके देखता हूं तो कहता है 4 कैरेक्टर, बट 4 कैरेक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं. यू कैन गेट टू सी दिस 4 कैरेक्टर, बट Yes. मेमोरी में उसके लिए 12 कैरेक्टर यूटिलाइज किए जाएंगे. आप बोलोगे सर ये सिर्फ 4 कैरेक्टर्स है. इन द मेमोरी दिस 4 कैरेक्टर्स विल ऑक्युपाई 12 बाइट्स. ये मेमोरी में और ये आपके स्क्रीन पे. तो सारे फंक्शंस वगैरह यू कैन अप्लाई. तो एनकोडेड बाइट स्ट्रिंग था तो बताएगा कितने बाइट्स है, तो 12 बाइट्स है. उसे डिकोड किया तो कितने कैरेक्टर्स है. सो दिस इज कैरेक्टर स्ट्रिंग, वेयर दिस इज बाइट स्ट्रिंग. देखो यहाँ बी है, बी आएगा तो बाइट स्ट्रिंग. यहाँ बी नहीं है तो ये कैरेक्टर स्ट्रिंग है. कैरेक्टर स्ट्रिंग में भले वो 4 या 5 बाइट्स यूज करे मेमोरी में, उससे कोई मतलब नहीं. इट्स अ सिंगल कैरेक्टर, फर्स्ट कैरेक्टर, सेकंड कैरेक्टर, थर्ड कैरेक्टर एंड फोर्थ कैरेक्टर. सो रेगुलर स्ट्रिंग व्हाट यू गेट टू सी इज व्हाट यू गेट. ओके, तो जो आपको दिखाई दे रहा है उतने ही कैरेक्टर्स. बाइनरी स्ट्रिंग में मेमोरी में दैट कैरेक्टर हाउ मेनी पोजीशंस विल ऑक्युपाई वो बात आएगी. तो मेमोरी में occupies, Devanagari occupies 3 bytes. That's the view of the memory. But in the program, I will consider as a single character. In the memory, it will occupy 3 bytes of memory to store Have you understood this concept? Okay. Memory representation and the view that you get to see. These are two different things. How it is stored internally in the memory and what you get to see are two different things. Okay, किसी का कोई क्वेश्चन है? Anybody wants to ask anything? No. No. And it is true for all the characters. I mean, all the characters जब मैं कह रहा हूँ सारे characters. अगर आप अपने इमोजीज को वगैरह देखते हो, उनके भी इसके लिए कोई ना कोई कोड रहेगा. तो इमोजी को हैंडल करने के लिए न्यू मॉड्यूल इन पाइथन दैट इज अवेलेबल. सो दैट आई विल डिस्कस समटाइम्स लेटर. बट एक नया मॉड्यूल आ चुका है इमोजीज को हैंडल करने के लिए पाइथन में. दैट मेक्स आवर जॉब मच मोर इजियर, बट वी विल कम टू इट लेटर बिकॉज आवर वर्क इज नॉट डन विद दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स. ये तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था कैसे हम इसे यूटिलाइज कर सकते हैं. ओके, नाउ सिंस यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस, यस प्लीज. सर आई हैव अ क्वेश्चन. बोलिए. सर अगर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स है Like? और वो लाइक चलो स्पेशल देयर इज अ स्पेनिश, हाँ देयर इज अ स्पेनिश कैरेक्टर No, जो there is यूटीएफ. nothing. एक मिनट. There is nothing as Spanish character, English character, French character. They are all Latin. ओके. Okay, तो उसमें कोई स्पेशल नहीं है. तो ये सारे लैटिन कैरेक्टर्स हैं. तो जैसे स्क्रिप्ट, हिंदी कैरेक्टर मराठी कैरेक्टर नहीं कह सकते, ये सारे देवनागरी है. 14 लैंग्वेजेस है जिनका स्क्रिप्ट देवनागरी है, इंक्लूडिंग हिंदी एंड मराठी. दैट वी नो. हिंदी, मराठी, नेपाली, दैट्स व्हाट आई कैन रिमेंबर. सबका स्क्रिप्ट देवनागरी है. देखते हो. You should be proud of Devanagari. 14 different languages. तो मैं कहता हूँ देवनागरी स्क्रिप्ट. विकिपीडिया में चलते हैं. देवनागरी, संस्कृत नागरी इज लेफ्ट टू राइट. ऐसा 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 है. 14 प्राइमरी कैरेक्टर्स, 14 वोवेल, 50 कॉन्सोनेंट. ये कब से आ गया है? 7th सेंचुरी सी से है. ठीक है, कितने लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट करता है देखते हैं. ओल्डर देन द नागरी अकॉर्डिंग टू फिशर. हिस्ट्री कहाँ का है? इंडिया में, नेपाल में, तिब्बत में, साउथ ईस्ट एशिया में. ब्रह्मी स्क्रिप्ट, नंदगिरी स्क्रिप्ट. लैंग्वेजेस कितने हैं मुझे देखना था आपको. बड़ा मैं इतना ये देखो लैंग्वेजेस, इतने सारे लैंग्वेजेस एंड मेनी मोर. अवधी हमें तो मालूम ही नहीं है. भोजपुरी मालूम है, बोरो मालूम है, ब्रिज मालूम है, छत्तीसगढ़ी, डोंगरी, गुजराती, गढ़वाली, हरियाणवी, हिंदुस्तानी, कश्मीरी, कोकनी, मगही, मैथिली, मराठी, मारवाड़ी, सबके लिए. राजस्थानी, संस्कृत, संताली, अरे क्या शेरपा, सिंधी, सुजापुरी, सबके लिए देवनागरी है. तो आई वाज सेइंग 14, ये तो शायद 14 से भी ज्यादा जा रहा है.
You can read this article. It's a detailed article. It will tell you how many language. वैसे ही आपका क्वेश्चन था स्पेनिश वगैरह रहेगा तो let me answer that as well. तो Actually, हाँ हाँ, so basically मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा कैरेक्टर है जो UTF-8 से हैंडल नहीं हो रहा है, हाँ आगे बोलो, कंप्लीट करो सेंटेंस. हाँ हाँ, तो उसमें मतलब दूसरा कुछ यूज कर सकते हैं क्या, मतलब इनकोडिंग? दैट्स अ नाइस लाइक क्वेश्चन. एक सिनेरियो देखा था मैंने जिसमें UTF-8 हमने यूज किया था, बट जब वो इनकोडिंग डिकोड हो रहा था तब वो डिकोड नहीं हो रहा था, एक उल्टा क्वेश्चन मार्क आ रहा था. That's a very common problem that you have. Very common problem. That means that character could not have been encoded by using UTF-8. Correct. UTF-8 will encode most of the characters, huh? Most of the characters. But you will definitely come across some scenarios where UTF-8 does not help. So in that case, what you need to do for that script, whichever is a specific encoding format, that is the one that you'll have to use. So unless and until you do not use the correct encoding mechanism, you will not be in a position to encode and decode the data. So there are a lot of characters which cannot be encoded by using UTF-8 or UTF-16 or UTF-32. In that case, I need to know the exact encoding that has been designed for that script. And using that encoding format only we can encode and decode. Okay. But UTF-8 will work almost all the times. But आपने जो बोला वो सही है, ऐसा होता है sometimes. And the only solution that is, फिर आपको आपकी script मालूम होनी चाहिए, कौन सी है वो script. If you know the script, do Google search, find out what is the encoding. जैसे अभी जापानीज के लिए I did not know, तो हमने सर्च किया ना जापानीज के लिए, and we come क्या देखा हमने, shift क्या था, JIS, JIS ना, तो वो encoding डाला, and then we put encode the data. और उसके पहले जब UTF-8 से कर रहे थे, it was giving some garbled value error मैसेज दिया उसने. And when we did it by using UTF-8 से हो गया, but किसी और से QI से अगर मैं करता Japanese characters को, it will generate an error. QI is meant for Russian character sets. तो ऐसा हो सकता है कोई Russian character ऐसा हो that cannot be encoded by using your some encoding format. So you have to know the exact encoding format for it. और कोई चारा नहीं. But sir, encoding and decoding should be same, ना? Yeah, of course. तो आपको पता है कि आपके लैंग्वेज के लिए KOI is the encoding format. तो encode KOI से करो और decode भी KOI से ही करो. His question was, he was working on a project where they tried to encode the data and that encoding failed. Yeah, it gave you a wrong result. That was because you did not use the appropriate encoding format. That's the only problem. तो आपने जो encoding format जो use किया, या encoding format ही कहूँगा मैं, encoding का standard जो use किया, that was not right. So UTF-8 is not a solution to all of them. I have been using the word golden standard. Golden standard मैं कह रहा हूँ because it will work most of the time. I did not say it will always work. Right. Okay. सारे यूनिकोड कैरेक्टर्स के लिए काम करेगा, बट दुनिया के सारे कैरेक्टर यूनिकोड में से नहीं रिप्रेजेंट किए जाते हैं. Right. Okay. Anything else? सर अलग अलग डालेंगे तो No, you error cannot आएगा. mix. मतलब अलग अलग मतलब Encoding अलग अलग. one string cannot be encoded into by using encoded decoded by using two different standards. Not possible. पूरे फाइल के लिए you will have to have one standard, however big that file is. You cannot have part of the file using UTF-8 and part of the file using, यानी एक टेक्स्ट फाइल है उसमें 4 encoding formats यूज किए, not possible. For the entire file you use only one encoding format and one decoding format. हाँ, 3 अलग फाइल बना सकते हैं आप with 3 different encoding format. Not otherwise. Sir, Yes. sir, so is there any way to check which encoding format has been used? No, you have to know it beforehand. Okay. यानी आपके पास एक स्ट्रिंग आ गया और आप कह रहे हैं मैं उसमें से चेक करूं वहां एनकोडिंग कौन सा है, करेक्ट? Yes, sir. Okay, let me answer this question. And this is important. जब इंटरनेट से आप पेज डाउनलोड करते हैं, आपको पहले से पता होता है कि पेज में कौन से टाइप का डेटा है. When you visit a site and the page is displayed, your browser renders that page so that characters are displayed. But do you in advance know what kind of characters are going to come? No. You know it. You just did not know where to see it. Because जब वो पेज आपके मशीन पे डिस्प्ले होने आ रहा है, उस पेज का हेडर है
हेडर में मेटा डेटा रहेगा और मेटा डेटा में उसका एनकोडेड फॉर्मेट आ जाएगा पहले। Okay. उसका एक स्टेटस कोड आता है, 200 आता है, कभी 404 आता है, याद है 404 Yes, आता yes, रहेगा, yes. पेज नॉट फाउंड। Yes. वैसे 200 आ गया तो समझो कि ओके। 200 के आगे क्या आएगा तो उसका एनकोडिंग फॉर्मेट। लेट्स सी इफ वी कैन सी दैट। जैसे एक नजर घुमाते हैं, देखते हैं हम लोग ऐसा देख सकते हैं क्या। लेट्स ट्राई। मैं कोई वेब पेज विजिट करता हूँ। समझिए लैटिन स्क्रिप्ट ये पेज मैंने विजिट कर लिया, या कोई मराठी न्यूज़पेपर, सकाळ न्यूज, सकाळ ई पेपर पुणे, सकाळ.com। तो ये मराठी पेपर मैंने, यहाँ तो सारी इमेजेस है क्या, इन्होंने टेक्स्ट डाला ही नहीं, मराठी सारी इमेज डाल दी। विकी मराठी पे चलते हैं। मराठी विकिपीडिया इस पेज पे आ गया, ठीक है। मराठी विकी तुमचे स्वागत असो, काइंड ऑफ थिंग। आंबेडकर चळवळ, ऑल दोस थिंग्स हैव नाउ बीन गिवन अवे। कोरोनाची विषय, अरे मुंबई पुणे वेरी हाई कोरोना रेट, व्हाट एवर इट इज, दैट वाज नॉट आवर इंटरेस्ट एक्चुअली। अपना इंटरेस्ट कुछ और है। तो यहाँ देखता हूँ मैं, इंस्पेक्ट कहीं दिखाई दे रहा है। राइट क्लिक करके चेक कर सकते हैं ना। डेवलपर टूल्स, एक मिनट। ये दिखाई दे रहा है, स्टेटस कोड 200, टाइप डॉक्यूमेंट, इनिशिएट समथिंग, साइज कितना, ये सारी जानकारी यहाँ आ रही है। और यही कहीं रहेगा आपका एनकोडिंग फॉर्मेट एज वेल। ये कितने मिली सेकेंड्स में ये पीएनजी आ गया। ये इमेजेस है, इनिशिएटर मुख्य पृष्ठ, सारे इमेजेस इमेजेस इमेजेस। टेक्स्ट देखते हैं कहीं तो ये 304 जेपीजी में जो भी रहेगा, सारे कोड जो बता रहा है स्टेटस क्या है। बट मैं कुछ और दिखाना चाहता था, मैं दिखाना चाहता था द मेटा डेटा। कहीं ऊपर मेटा डेटा दिखाई दे रहा है, डॉक, ये मेरी रिक्वेस्ट थी यूआरएल की। देखो यहाँ क्या ऊपर दिखाई दे रहा है, कैन यू रीड दैट एट द टॉप क्या लिखा है, कैन रीड इन द ब्राउजर के विंडो में क्या लिखा है, ये ऊपर का पढ़ सकते हैं क्या, Yes, sir. क्या पढ़ सकते हैं, mr.wikipedia. mr.wikipedia.org/wiki, एंड आगे क्या लिखा है, मुख्य पृष्ठ। Yes, sir. Yes. ओके, जरा यहाँ देखो तो विकी के आगे क्या लिखा है, देखो एनकोडेड फॉर्मेट में मुख्य पृष्ठ दिखाई दे रही है। देखो Yes. https mr.wikipedia.org.wiki/ कैन यू सी दैट, Yes. ये एनकोडेड फॉर्मेट में आ गया। इसके आगे ये बताएगा एक्सेप्ट रेंज, कौन से टाइप का डेटा आ रहा है आपके पास, Bytes. बाइट्स आ रहा है। Fine. लैंग्वेज कौन सा है तो एमआर। ये देखो कैरेक्टर सेट कौन सा है, कैन यू सी दैट, Yes, sir. Yes. क्या दिया है, UTF-8. इसे हम लोग कहते हैं हेडर मेटा डेटा। यानी व्हेन द पेज इज सेंड टू यू, यू डू नॉट गेट टू सी द पेज। आपको क्या आएगा, पहले मेटा डेटा आएगा। आई एम जस्ट शोइंग यू दिस मेटा डेटा सबके लिए। ये देखो यहाँ अपना ये मेटा डेटा है,
अबाउट दिस पर्टिकुलर पेज, ये सारा मेटा डेटा है। ये बता रहा है आपको, देखो विकिपीडिया / मुख्य पृष्ठ ये एनकोडेड फॉर्मेट में है, ये रिक्वेस्ट यूआरएल भी एनकोडेड, ये गेट रिक्वेस्ट था। गेट रिक्वेस्ट मतलब वेब से मैंने वो पेज गेट कर लिया, आई गॉट दैट पेज, स्टेटस कोड 200 है, दैट मींस दैट हैज सक्सेसफुली बीन फेच्ड। ये इस लोकेशन पे सर्वर पे पेज रखा गया था। ये डेटा कौन से टाइप का आ गया, बाइट्स टाइप ऑफ डेटा हैज बीन रिसीव्ड। ये डेटा का एज क्या है, तो इतने समय से वो डेटा है मेमोरी में, व्हाट एवर इट इज। कंटेंट का टाइप क्या है, लेंथ कितना है, तो इतने सारे बाइट्स का डेटा है। कंटेंट का टाइप क्या है, टेक्स्ट एचटीएमएल, कैरेक्टर सेट कौन सा है, तो UTF-8, गॉट इट, UTF-8। तो आपने किसी ने पूछा था पता कर सकते हैं क्या, तो ये ऐसे पता कर सकते हैं अगर सम डेटा आ रहा है, तो मेटा डेटा पेज आ रहा है। तो वैसे फाइल जो आप लिखते हो, टाइप करते हो, जब सेव करते हो, दैट टाइम ऑल्सो दैट इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज द एनकोडिंग फॉर्मेट दैट इज स्टोर्ड इनसाइड द फाइल, तो फाइल्स में यहाँ वहां देख सकते हैं। अगर आपको पता है उसका मेटा डेटा कैसे पढ़ना है, जस्ट शोड यू हाउ टू रीड द मेटा डेटा। मैंने आपको बताया मेटा डेटा कैसे पढ़ना। ये कॉम्प्रेस होके आया था यानी दैट मीन ये बाइट्स कुछ ज्यादा है, कहा गया बाइट्स, ये इतने बाइट्स है, 60,000 बाइट्स एक एक करके आना शुरू करे, इट विल ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम इट विल टेक। और पैकेट्स अगर आउट ऑफ ऑर्डर आ गए तो वापस उसको रिक्वेस्ट भेजना होगा, TCP/IP जो आपका प्रोटोकॉल है। Okay, so to overcome over that problem, it will compress the data and send, ताकि number of bytes that are transmitted will also be reduced. यहाँ decompress हो जाएगा आपके इसमें। तो compressing के लिए क्या यूज किया गया है, deflate। I'm going to teach you how to use this deflate and zzip also in our course। तो ये deflate वाला यूज किया जाए, उसको यूज करके उसको decompress कर गया और फिर उसने ये पेज आपके यहाँ दिखाया। सो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो compressed डेटा आया था उसको inflate किया गया है और डिकोड किया गया है यूजिंग UTF-8 बाय योर ब्राउजर। तो ब्राउजर को कैसे पता है UTF-8 यूज करूं, बिकॉज मेटा डेटा में इंफॉर्मेशन आ चुका है। तो फर्स्ट व्हाट कम्स टू यू इज द हेडर। कहा गया हेडर 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 हेडर, ये आपका पूरा हेडर, रेस्पॉन्स हेडर आ जाता है। ये हेडर के बाद आपका डेटा तो इसके नीचे, ये देखिए यहाँ से आगे, फिर ये तो हेडर है, सॉरी हेडर है, और रिस्पॉन्स में ये आपका डेटा है, बाद में आएगा। फर्स्ट व्हाट विल गेट इज द हेडर एंड फॉलोड बाय द हेडर what will have is the data। तो ये आपका सारा हेडर है, ये बताता है कौन कौन से ब्राउजर में ओपन हो सकता है, ये सब कुछ होता है। तो डॉक्यूमेंट टाइप है, नेविगेट करने वाले, फ्लैश साइट है, देयर इज सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन, इतनी सारी मेटा डेटा आ गया है। यानी आपने ये जो लिखा है उसकी जानकारी, एंड योर ब्राउजर यूजेस दिस इंफॉर्मेशन टू डिकोड द डेटा इन अ करेक्ट वे। This is something that we could rather discuss when we do web development in our course. But then that was a good question. Both the questions are good. If the character is not displayed, then figure out which encoding format should I use to encode that data correctly, ताकि वो उल्टा क्वेश्चन मार्क वगैरह दिखाई ना दे। First, second, if you want to find what is the encoding mechanism, for file also we have a header. For the page that come across on the network, there is a header. So find out, go into that, find out a way to extract the header, and in the header you will always have information about what encoding format has been used to save the file or save the page. All that information is always there. तो सर फाइल इन द सेंस की जो फाइल हम क्रिएट कर रहे हैं उसमें चेक कर जो सकते फाइल सेव करते हैं, आप टाइप करते हैं वो सारे फाइल्स, हैं। सर आप थोड़ा दिखाएंगे क्या कैसे करते हैं? वो भी देखें। तो एक बार वो भी देख लेते हैं फाइल में कैसे कर सकते हैं। सपोज इफ आई क्रिएट अ फाइल, ये फाइल है, इस फाइल में मैं कुछ सेव करना चाहता हूँ। तो मैंने कुछ देवनागरी कैरेक्टर्स सेव कर लिए सपोज, या वही पेज में से, विकिपीडिया पेज में से कैरेक्टर्स कॉपी कर लिए। ये अपने मराठी में कुछ तो लिख दिया इस फाइल में। अब अगर इस फाइल को मैं सेव कर रहा हूँ,
अगर इस फाइल को कहीं तो मैं सेव करता हूँ सपोज, ऐसे मार डेटा नॉर्मल टेक्स्ट फाइल है, इसे मैंने सेव कर दिया, इससे हो गया। अब इस फाइल का मेटा डेटा पढ़ने की कोशिश करते हैं। आई विल नॉट गारंटी यू, बट यार कोशिश करते हैं। सो आई नीड सम टूल्स टू रीड दैट थिंग। इसका भी मेटा डेटा रहेगा, तो मैं चेक करता हूँ मेरे पास है क्या। लाइक माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में चलते हैं। हमने इसमें देखा था ना कंप्यूटर फंडामेंटल्स में, अदर्स टेक्स्ट एडिटर, Yes. इमेज इमेज के लिए, तो इमेज के लिए तो सबके लिए है। That displays binary hexadecimal data as a grid of cells in editable hex codes, यानी binary के hex code दिखाएगा, including EDBIG, ASO&SO, IBM, K15, KI and many more. ये सारे encoding formats को support करता है। QI भी रशियन के भी support कर रहा है, तो देवनागरी को support करता है कि नहीं, let's check it out. Initialize हो रहा है, complete हो गया, open कर दो। So when I open up this particular editor, कहता है pin to taskbar, start नहीं, taskbar, नको, don't tell. Correct. So I have this editor that has now been opened. तो इसमें मैं क्या करता हूँ, फाइल ओपन करता हूँ। अभी का जो मराठी फाइल थी उसे ओपन करते हैं। तो 10 में आई हैड अ फाइल कॉल्ड एज मराठी डेटा, ये अपनी फाइल थी मराठी का, इसे हमने ओपन कर लिया। ओपन करने पर यू विल हैव दिस फाइल दैट इज देयर, एंड इफ यू लुक एट दिस, दैट्स जस्ट नॉट रीडेबल, बट ये उसका सारा बाइनरी डेटा है उसी फाइल का। यहाँ कहता है अनसाइन, ये साइन, ये 24 बिट इंटीजर, 30 बिट इंटीजर में से आएगा। तो ये है क्या इसके बारे में, यूनिक्स में, मैकिंटोश में, डेट टाइम, ये UTF-8 का कैरेक्टर, ये इसमें है UTF-8 के कैरेक्टर्स है, बता रहा है, ये दो वगैरह सारे UTF-8 के कैरेक्टर्स है। ओके, सो इट इज गिविंग यू ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज देयर। ये सारा आपको मेटा डेटा दिखा रहा है। ये 6 किलोबाइट्स की फाइल है, ऑन द डिस्क इट इज ऑक्यूपाइंग 6 बाइट्स, बट एक्चुअली 5824 बाइट्स की फाइल है, एंड सो ऑन। तो लेट्स टेक सम रशियन डेटा। मराठी फाइल की जगह रशियन फाइल लेते हैं, बिकॉज ये QI को अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहा है। तो आई जस्ट डिलीट इट एंड आई से विकी रशिया। अब इसमें जो है रशियन है। ये आपकी रशियन फाइल है।
इसे मैंने सेव कर लिया, इस डेटा में से ओपन कर लेते हैं। ओपन, ये फाइल है, surprisingly it did not display the Russian data correctly. जरा क्लोज करके दोबारा स्टार्ट करते हैं। ये जो इनिशियल है यही उसके बारे में मैजिकल नंबर जो बताता है इसमें फॉर्मेट क्या है, डेटा क्या है। लिटिल इंडियन यूज किया गया है और आपको चाहिए था ये ट्रांसलेट की सर्विस दे रहा है। ओपन फाइल, मराठी डेटा, but anyway, I'll not spend too much of time, but tools like this will give you an opportunity to see the data that is there. It's just like we'll have to study a bit more and find out visible data types, 8 bits. आपको बाइनरी में चाहिए, हेक्साडेसिमल में चाहिए, हमने कहा था हेक्स, दैट इज शॉर्ट फॉर्म। ये देखिए कैरेक्टर सेट आ गया। तो इतने सारे कैरेक्टर सेट है जो ये सपोर्ट कर रहा है। ये कैरेक्टर सेट्स क्या है? सो दीज आर नथिंग बट कि 8 रशियन या यूक्रेनियन कैरेक्टर सेट, ये उसका रशियन यूक्रेनियन कैरेक्टर सेट है। तो बोल रहा है कौन से कैरेक्टर सेट से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। Okay, as dot, we could say this is the character set that has to be utilized. So you could do the settings and you could find out. So there are actually ways through which we can find out for the files as well. जैसे हमने वहाँ inspect कर लिया, likewise you have to make use of some tools like this to see what is the actual binary data that is stored inside the file. Not just that we can edit this data as well. So insert byte row, आप नई row insert कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, एक बाइट डिलीट कर सकते हैं, वन सेक्शन ये बाइट डिलीट कर ले उसमें से, पॉसिबल है। ऑल सच थिंग्स आर पॉसिबल। सो देयर आर टूल्स थ्रू व्हिच यू कुड अचीव और गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द मेटा डेटा ऑफ द फाइल। ओके, हेक्स एडिटर वाज वन सच टूल। There are some sites also which are there. So there is one such site. Let me just try out on that site. There is, ये कहता है get all metadata info of your file. तो ऐसे एक फाइल है, डेटा है, तो यहाँ एक बार ट्राई कर लेते हैं। व्यू मेटाडेटा ऑफ योर कंटेंट फाइल, आप अपनी फाइल चूज कर सकते हैं।
So we had this file called as mar.txt. जरा metadata पढ़ के देखते हैं इसके. mar.txt ये रशियन डेटा था. तो ये फाइल को हमने इनिशियलाइज कर लिया. And it will give a lot of information. So metadata, ये फाइल का नाम क्या है, साइज क्या है, टाइप कौन सा है, प्लेन है. देखो ये UTF-8 में ही स्टोर किया गया है, बता रहा है. लाइन काउंट 5 है, वर्ड काउंट ये है, कैटेगरी टेक्स्ट है, एंड ये आपका हेडर है जिसको आप कन्वर्ट करके देख सकते हैं. सो इट कैन गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट अ फाइल. देयर आर सच टूल्स. मेटाडाटा टू गो इज वन सच साइट वेयर यू कैन व्यू द मेटाडाटा अबाउट अ फाइल. तो ये हमने अपनी फाइल सिलेक्ट की थी and we said view metadata. You could view the metadata of that file. Okay. And it said इसने encoding Windows का format file है. UTF-8 encoding mechanism use किया गया है. Type plain text है, and so on. That's it. So there are tools, and I've just shown you one such tool from where we can find information about the text file as well. Is that okay? Did you make a note of this site? When we explore something like this, metadata2.go.com. I'll just share the link with you all. Sometimes such things are quite useful. This was the site where I visited. Metadata2go.com. Okay, so mark करके रखिएगा. It could be quite a handy thing for you to visit. Okay, so let me just quickly finish with one small topic so that tomorrow when we meet, we can start with the next topic altogether. There are some characters which are not visible. They're all white space characters, not visible to the naked eyes, but they're meant for screen formatting the output. They're meant for screen formatting the output. Such characters are called as escape sequences. As the name says, escape sequences, they can be used to format the output, but they are not visible to naked eyes. So let me just give you a glimpse about all these escape sequences. And let us see which one amongst them are accessible over here, means have impact in Python prompt. Okay, so let's jump on to this escape sequences. You can write escape sequences. They are meant for screen formatting the output. Okay, so let's have a look at escape sequences. There are so many of them. There is /n, that's new line. There is slash, there is slash quotes, double quotes, /a, /b, /f, n, r, t, v, /o, /hex, and so on. So let me just give you a glimpse about few of them. Okay, here we go. Suppose I'm writing, I'm inviting somebody. Here I go. And I'm typing something. Yeah? Watch it very carefully. Yeah. I'm going to write a statement saying my string str is equal to, I take the same thing, okay, hello, space, dear. So if I print this as, if I print this string as, it says hello space dear. But between hello and dear, if I add a white space character like /n, that's escape sequence, that will print take hello on the first line and dear probably on the second line. So now if I want to print as, look, hello on the first line and dear on the next line. So what has happened over here, this /n is a new line character. So when /n is interpreted, it will go to the next line. Whatever comes after /n has gone on to the next line when it is being displayed. Likewise, between hello and dear, if I want to give a space more than one character, I can say /t, tab. So if I say tab, you'll find one tab space. Normally it's 4 character long. That has been put across between 2 characters. So /t stands for tab, /n stands for new line. That's the reason we went to the next line. So if I wanted to say carry /n /n ही रहे, don't interpret it as a new line character. Then in that case, I use something called as a raw strings. How do I do that? I'll just add
R, and let's see if I print it. Okay, that's a raw string. That means this escape sequences will not be escaped. Will not be. It will be taken as pure sequence of characters. They will not be considered as escape sequences. The raw string here, where while I'm printing, /n has not been interpreted as new line. /n is just /n. So I could create a raw string R. We saw B, now this is raw R, raw string. Sometimes raw strings are also useful, but that's not our topic for discussion right now. Just it came to my mind, so I discussed. N we saw, and then let's say /f. Now when I'm saying /f, it may not have any meaning over here. यहाँ कुछ तो ऐसा एक square आ गया है. /f is meant for some other kind of output, especially printing. जब आप print कर रहे हैं और printer पे print कर रहे हैं, F for those dot matrix printers stands for form feed. Form feed का मतलब क्या है? अगर आपके पास continuous stationery है और आपने पहले कुछ तो print किया, से आपने hello print किया first page पे, अब first page पे जितने सारे blank line, जितने सारे lines खाली है, वो छोड़ के dear should get printed at the beginning of the next line on a paper. तो form feed, paper, form मतलब paper, paper को printer में feed करो, the rest of the output should get printed onto the next page. Form feed /f. This may not be supported by on this console. ये console के लिए नहीं है, printer के लिए है. So in that case, other than /f, suppose मैंने कहा /v. ये vertical tab है. This may also is not supported nowadays. Vertical tab, जैसे horizontal tab है वैसे vertical tab. That's also not supported nowadays. /v हो गया. Then /r. Oh, that's definitely supported, and that's very interesting. Now if I print s, it says hello dear. Oh, we do not get to see any impact of /r. Okay, strange. Let's see once again /r, hello dear. Okay, let me see. Where is /r? Carriage return. Okay, it did not give any impact over here. Anyway, so /r actually has a different meaning altogether. It'll take the output to the beginning of the next same line. So I'm wondering why it did not display. S print करके देखता हूँ. Hello dear है, that's correct. Print s, hello dear, it did not go. Okay, strange. Let's say /b, that stands for backspace. अगर मैं string print करता हूँ, देखो क्या हुआ? Oh, that also is not. So let's, if this ideally is not supporting it, let's try on the console. I am wondering whether it's a problem with the ideally or not. Okay, so let me just check it on the console. Let's go on to Python, the Linux console, and check this thing. You see /r/b to common hai. So let's check it on the console. Python 3, and I say s is equal to hello /n dear. So if I say print s, it says hello and dear on next line. Very good. But like /n की जगह अगर मैंने /r कहा होता और फिर अगर मैं स्ट्रिंग को प्रिंट कर लेता, yes, it is working. तो कहता है dear o कैसे आ गया? Okay, you are wondering. So let me break it into parts to explain you how did dear o come. Normally, watch it. Normally, if I said s is equal to hello, okay, and I print s, hello print किया, cousin next line पे चला गया. Oh, that's okay. When I create a string hello /r dear, तो पहले HELLO print हो जाएगा. अगर ऐसे print हुआ HELLO hello print हुआ /r transfer the control back to the beginning of the same line. और फिर यहाँ print किया उसने DEAR, यानी D E A and R. तो आपका output क्या बना? तो dear o. Let's check it out. यानी if I say print या print s, देखो dear o कैसे हुआ? H is being replaced with A, D, E, A, R बचा O. That means /r transfer the control back to the beginning of the same line. उसी line के beginning में चला गया. Likewise, अगर मैंने /r की जगह /b लिखा होता, that's backspace. तो देखो it would print now hell dear. यानी एक backspace, एक column पीछे चला गया. Hello print हुआ, cursor went one column back. और ओ की जगह डी प्रिंट कर लिया. तो लाइकवाइज अगर मैं 2 बार /b लिख देता, कैन यू गेस व्हाट वुड गेट प्रिंटेड? या 3 बार प्रिंट कर देता /b, एनी गेस व्हाट वुड गेट प्रिंटेड? dear.
here. EDR. Okay, here. So let's check वैसे होता है क्या? If I print it, कहता है here 3 बार कर. तो कर्सर को 3 बार नहीं, लाइन के बिगनिंग में ले जाए ये कहना है, तो /r कहिएगा. /r से it goes to beginning of the same line. तो dear और o, then कर्सर लाइन के बिगनिंग में चला गया h की जगह और dear o प्रिंट कर लिया, तो /r हो गया. तो लेट्स सी /v यहाँ एक्शन में है, आ रहा है क्या? वर्टिकल टैब. ये आ गया वर्टिकल. जैसे हॉरिजॉन्टल टैब था वो आइडियली में नहीं दिखाई दे रहा था, यहाँ काम कर रहा है. /v हो गया. /t तो हमने देखा था हॉरिजॉन्टल टैब, ये हॉरिजॉन्टल टैब था. तो वर्टिकल टैब भी देखा हमने, ऊपर से नीचे आ गया, वैसे हॉरिजॉन्टल टैब. /v /t और सपोज हर्ष है सिक्योर्ड 97%. तो अगर हर्ष ने 97% सिक्योर किया है, तो आई वुड रादर राइट my percentage is s is equal to 97%. ऐसा एंड s प्रिंट करेंगे तो 97 प्रिंट हो रहा है, but that's very risky actually. Print s या 97 print. Sometimes what happens is this person character also has some meaning. If there are some characters that appears after percent, वो percent नहीं print करेगा, something else will get printed. So if I wanted to print percent correctly, percent नहीं, sorry. If I say 97, और क्या लिखे? या चलो स्वीट होम लिखना है मुझे, तो मैंने कहा डबल कोट्स में लिखा SWEET स्वीट होम इन डबल कोट्स, स्वीट होम इन डबल कोट्स. एंड इफ आई प्रिंट s, it doesn't print double quotes, it is only printed sweet home. तो मुझे डबल कोट चाहिए था, तो मैं क्या कर सकता था? s इज इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर मैं देता स्वीट होम, ये खत्म किया, ये ऐसे खत्म किया. अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ आगे स्वीट होम इन डबल कोट्स, पर मुझे बताना था कि अंदर वाला स्लैश है ना, डबल कोट्स है ना, वो डिस्प्ले पर्पस के लिए है. जैसे मैंने कहा एपोस्ट्रोफी एस लेते हैं ना हम लोग, जैसे हैवेंट, तो मैंने लिखा s इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में लिखा है HAV या डजंट, ऐसा कुछ तो कर लिया. तो अगर ऐसा करता है, ये कह रहा है नहीं यार वो डबल कोट्स यहाँ, सिंगल कोट्स यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ खत्म हो गया, ये क्या आ गया है? तो अंदर वाला जो एपोस्ट्रोफी है ना, वो डिस्प्ले पर्पस के लिए है. तो हाउ डू आई राइट इट? आई विल पुट अ स्लैश हो गया, तो ये एस्केप हो गया. तो व्हाट इज द ओरिजिनल मीनिंग ऑफ दैट कोट्स दैट इज बीइंग इग्नोर्ड? अब मैं अगर प्रिंट करूंगा, वो NT एपोस्ट्रोफी आ गया, otherwise you would not have got that quotes. And if you want to ignore the original meaning of any character, n is n, n का ओरिजिनल मीनिंग इग्नोर करके न्यू लाइन करना है /n. t is t, पर t को टैब बनाना है तो /t. कोट्स इज कोट, बट कोट को डिस्प्ले के लिए एपोस्ट्रोफी जैसे यूज करना है, तो इन दैट केस /कोट्स. तो अगर मुझे डबल 2 बार लेते हैं, जैसे आई हैव एन इक्वेशन, मेरा एक इक्वेशन है इज इक्वल टू a divided by b into c, ऐसा मेरा इक्वेशन है. एंड इफ आई वांट टू प्रिंट दिस इक्वेशन, प्रिंट eq, क्या प्रिंट कर रहा है? *c. ये क्या हुआ? a डिवाइडेड बाय b *c लिखा था, बट a बैकस्पेस b कंसीडर किया उसने. बैकस्पेस b की वजह से a कर्सर a के नीचे चला गया, बचा *c. तो दैट शुडंट हैपन. आई वांट स्लैश टू बी कंसीडर स्लैश, तो 2 स्लैश डाल दो. अब अगर प्रिंट करोगे आ गया a/b *c. तो 2 स्लैश विल एस्केप स्लैश, स्लैश कोट्स विल एस्केप कोट्स, स्लैश डबल कोट्स विल एस्केप डबल कोट्स, /n will escape n to create new line, /t for tab, /r for carriage return, /v for vertical tab, /t for horizontal tab. There are all such escape sequences which are available. जैसे /un हम लोग यूज करते कई बार फॉर यूनिकोड कैरेक्टर्स. कल हमने देखा था /u करके यूज किया था हमने. /u अगर आपको याद है, मैंने यूज किया था एक नंबर के आगे /u समथिंग समथिंग एट रिटर्न. प्रिंट करते यू अंदर मैंने डबल कोट्स में /u लिखा था और फिर उसका हेक्स वैल्यू दिया था. अगर आपको याद है क्या? देवनागरी कैरेक्टर का कोड लिया, तो आई हैड टू स्टोर इट, आई हैड सेड यू एंड देन आई हैड सेड /u. तो स्लैश आर ऑल एस्केप सीक्वेंस व्हिच आर देयर. लाइकवाइज आपके पास हेक्स और ऑक्टल के लिए भी है /h ऐसे, जैसे थोड़ी देर पहले लिखा था हमने सम कैरेक्टर s इज इक्वल टू डबल कोट्स में /x e4,
ऐसे लिखा था। तो ये /x E4 ये s प्रिंट कर रहा हूँ तो ये वो वाला कैरेक्टर है। तो ये /x बोल रहा था हेक्स में E4 है, वैसे E0 था कुछ तो थोड़ी देर पहले, कोई तो कैरेक्टर था E0। अब s प्रिंट करता हूँ तो ये a विथ ऐसा एक्सेंटेड कैरेक्टर a है, प्रिंट s। तो a विथ दैट टोपी है उसके ऊपर, काना मात्रा है, ऐसा एक्सेंटेड कैरेक्टर है। फ्रेंच में होता है नाक से आवाज निकालना है, घसे में से आवाज निकालना है, पेट में से आवाज निकालना है, तो there are various accented characters which are there. So hex के लिए /hex, okay. वैसे for octal we'll have /o, okay, and then you could have represented those characters. So these are all about escape sequences which are there. तो escape का मतलब है escape the original meaning of that codes, treated as a simple character for display purpose. Like /b, ignore the original meaning of b, treated as backspace. /t, ignore the original meaning of t, treat it like a tab. /v, ये v नहीं है, ये वर्टिकल टैब है, स्लैश की वजह से इसका ओरिजिनल मीनिंग इग्नोर किया, ये बैक स्पेस है। तो फिर ये कैरेज रिटर्न है, सेम लाइन के बिगनिंग में चला जाए, ये न्यू लाइन है, एंड सो ऑन. So these are some of the escape sequences that you have to see, and we have seen how to suppress their behavior. दो तरीके हैं, एक आप रॉ स्ट्रिंग बनाइए, r से स्टार्ट कीजिएगा, that character will remain as it is. और अगर आपकी रेगुलर स्ट्रिंग है और वहां उसका ओरिजिनल मीनिंग नहीं चाहते आप, जो टाइप किया वही दिखाई देना चाहिए, तो 2 स्लैश डालो। सिंगल स्लैश डालोगे तो इट विल बी इंटरप्रिटेड बाय योर ब्राउजर और योर कंसोल, एंड देन करस्पॉन्डिंग व्हाइट स्पेस कैरेक्टर विल गेट डिस्प्लेड। आपको व्हाइट स्पेस की जगह नॉन व्हाइट स्पेस कैरेक्टर, यानी वो जो आपको दिखाई दे ऐसा ही प्रिंट करना है, तो 2 स्लैश डालिएगा। You understood this escape sequences. They are meant for screen formatting. न्यू लाइन पे जाना है, टैब छोड़ना है, स्क्रीन पे डेटा फॉर्मेट करने के लिए इन सबका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। शंतनु, एनी क्वेरी? Shantanu, any query? नहीं सर। Okay. So with that note, we'll stop here today. Do try out whatever we have seen today. Okay, I'd also suggested you to read that article. So take my advice. You will be thanking me if you read that article about everything that the programmer needs to know about UTF-8. भले थोड़ा सा हाई लेवल लगे आपको, बट फिर भी कोशिश कीजिएगा to read that article at least once. Okay, that will give an insight as to आपको मल्टी लैंग्वेज यानी मल्टीपल स्क्रिप्ट में अगर काम करना है तो क्या क्या चीजों की आपको जानकारी चाहिए। तो when time comes you can read it, you can explore and find out that information, but you at least need to know that what you as a developer may need in future about handling multiple scripts. So do read that article. It will not take much time, half an hour time max. Just put that time and read that article that I had shared with you. On that note, we'll stop here today. Tomorrow when we meet, we actually go ahead with some complex data structures like lists and set and tuples, which are available in Python. And then we'll go about writing some small programs as well. So thank you all for the session today. See you tomorrow. Take care. Love you all. Bye bye. Encode decode आज का टॉपिक था, वो ट्राई कीजिएगा बाइनरी स्ट्रिंग से। बाय बाय। थैंक यू सर।